I said yes because of the amount of fun I'll have doing this. Also, putting myself in a situation of fear and completely out of the ordinary fear situation में ये लोग डाल देते हैं. So I think that will be very very exciting. I'll tell you, जब मुझे पूछा गया था इस शो के बारे में पहला मेरा रिएक्शन ये था कि मुझे ये शो नहीं करना है, क्योंकि मैं बॉम्बे का लड़का हूँ, ठीक है. मैंने ना कभी जू में गया हूँ, ना किसी जानवर के साथ इंटरेक्ट किया है, ना मतलब डॉग्स, मैं पेट्स का फ़ैन नहीं हूँ. तो और सबसे ज़्यादा मैं चिपकली से डरता हूँ. तो माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज वाई, ठीक है. बट एक होता है ना कि हर किसी को ज़िंदगी में एक चीज़ करनी चाहिए. एंड ये एक बहुत बड़ा शो है खतरों के खिलाड़ी, और उसका पार्ट होना मतलब आफ्टर बिग बॉस ये मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा. तो फिर मैंने डर को अपना थोड़ा, अभी डर गया नहीं है, उधर ही है, लेकिन आई वॉज लाइक कि लेट मी जस्ट डू दिस. It's the only show where I think not only your physical endurance is like not only you challenge your physical endurance but also your mental strength. And yeah, that's why I wanted to do it, because I have a lot of fears and I want to overcome all of them, and it's the perfect show for it. I did not have a daily soap right now. That's the only motivation. Else, who would want to go and get into the pool of fears? I think stunts that I get to do with animals or maybe snakes या फिर ऐसे reptiles, insects, I think I am maybe looking forward to do those stunts, because whenever I see anyone performing that kind of stunt on TV, I think they get so restless and I feel they get most uncomfortable at those times. So I really want to experience that, because that is something I'm never going to experience in my personal life. Nobody's going to put up cockroaches on my face. So yeah, maybe that kind of stunt. And something that I do not wish to do has to be the stunts that includes shock in them. Dreading would be anything which is related to height, and looking forward for, I think, something related to speed. कोई गाड़ी वाला स्टंट मिल गया तो मैं तो बैंड में जाता हूँ. No, I'm not going to say what I don't want to touch, because then they'll know and they'll put me in that stunt only to touch it. But I don't know. I feel every stunt is so different every season. But I feel like I enjoy heights recently. So maybe something to do with heights is something that I'm excited to do. I'm actually looking forward the water stunts, because मुझे वाटर से एक्चुअली फोबिया है. एंड मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वही लग रहा है कि इफ़ आई विल बी एबल टू डू इट, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग फैक्ट होगा कि हाँ मैंने ये कर लिया. बिकॉज आई वाज शूटिंग फॉर अ शो फना फॉर MTV एंड आई एक्चुअली ड्राउंड वाइल डूइंग अ सीन. एंड वो इतनी स्कैरी फीलिंग थी कि मुझे अभी तक वो फीलिंग याद आती है. एंड आई वांट टू जस्ट कॉन्कर दैट फियर, बिकॉज आई डोंट वांट टू लिव विद दैट. एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि वो वाटर के टास्क, मुझे स्विमिंग भी नहीं आती है, बट आई हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ माई practice to actually understand water. So water stunts के लिए बहुत excited हूँ. In fact जो गाड़ियों के stunts होते हैं where गाड़ियाँ आप जैसे रोहित सर के जो favorite stunts होते हैं, so I'm very very excited about those action stunts also actually. लेसन्स की बात करें तो जब मैंने शो को हाँ बोला, मतलब येस आई एम डूइंग दिस शो, मैं 7 दिन गोवा चला गया. 7 दिन गोवा का जितना हाइट वाला पूल था उधर मैंने स्विमिंग करी है. दैट्स द मैक्सिमम ट्रेनिंग आई हैव डन. रेस्ट मुझे ऐसे लगता है कि हर एक शो का एक अपना फ्लेवर होता है. वो तुम जितना प्लान करके जाते हो, आई डोंट थिंक सो चीज़ें काम, मतलब क्योंकि जब तुम प्रैक्टिकली चीज़ें करते हो, आई थिंक सब वो तभी के तभी होता है. सो मैंने वो स्पेस छोड़ा है कि उधर जाऊंगा, अपना दिमाग जो भगवान ने थोड़ा दिया है वो इस्तेमाल करूंगा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक गोल रखूंगा अपने दिमाग में कि मुझे ये स्टंट पूरा करना है. एंड आई थिंक जो उस पॉइंट पे होगा वो देखा जाएगा. आई एम जस्ट गोइंग टू लीव इट अप टू दैट. To be honest, I'm not prepared much for it because of my background. I'm a dancer myself. So physically strength, I know I'm there, but I think I'm working more on my mental strength, because whatever I've seen previously, I think it's more important that you keep yourself calm in a different and a very difficult situations. I think that's what I'm working on right now. You'll see a fitter Shivangi. And preparations, so I used to work out before also. But yeah, I have changed a few things in my workout. I've added a few drills in my workout, and I've changed my diet. Yeah, I'm a foodie. I love eating, but I'm not eating anything unhealthy.
So and वो मेरे लिए बहुत difficult था. So I've changed my diet. Yeah. I've been gymming the best way I can. I lost 17 kilos from Big Boss. And it's a game of mental strength and physical strength also. But mental strength is more important, I feel, in this show. I think comfortable shoes. Let's get practical. Comfortable shoes. A good pair of headphones. So you're listening to music and be in a good mood when you're going for the tasks. The third thing for me would be... This is such a good question. Third thing, adventure. और क्या हो सकता है? Perfume or deo, because you'll sweat a lot. And fourth thing, ऐसा कोई courage का दवाई होता है क्या? थोड़ा दारू वाले लेके जाते हैं, हिम्मत आ रही नहीं. Fourth thing would be, और बाकी चीज़ें तो वही दे देंगे यार, और तो कुछ नहीं. एक तो भाई स्पेयर पेयर ऑफ अंडरवेयर्स, जितने मर्जी अंडरवेयर्स खरीद लो कम पड़ जाएंगे, तो जितने खरीद सकते हो खरीदो, 100, 150, 200 खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है. एंड बाकी शांत मन, शांत हृदय, दृढ़ निश्चय एंड अंदरूनी ताकत और माँ का आशीर्वाद. Apparently Cape Town is really cold, so I'm going to have my warmers with me for sure. I am going to carry a lot of food that my mom's made because I'm a vegetarian. और मेरे खाने के बहुत टंटे हैं life में. So my mom has packed one entire suitcase of just food. And guess what? Of course, I'm a Gujarati. And what else? My passport, of course. And my book and my diary that I write in. That's it. We are allowed 68 kgs. So 68 kgs is like a must-have. I don't know for how long I'm gonna last there, but those 68 kgs I still feel is less. I was still fighting for few more kgs. 5 must-haves. Okay, my phone for sure, which is obvious. Lip balm because my lips get dry all the time. Nurofen, which is like a London tablet, like a paracetamol for my head because I get headaches. With this flight, with Nishant and Pratik going to be there, I'm going to get a very big headache also. So my pills I want for sure because we talk a lot. We all talk a lot. Number 4, what do I need? I never leave my house without the shitty Sai Baba's book. I have to read one chapter every night, so that's a must. And a foot of my mum. These 5 things I never leave home without. I've loved Divyanka Tripathi and of course Tejasvi. मैं हमेशा उसका नाम second लेती हूँ, मुझे मार डालेगी. But I love Teja, the way that she's performed all the stunts with absolutely no fear. And even Divyanka ma'am, she's been awesome. Shweta Tiwari has been amazing. Dharmesh has been really nice. I think I'll have to say Arjun for sure. Shabir, because he had a lot of fun doing what he did, and he did it with so much style. So yeah, he's my favorite contestant. आई थिंक मैंने पूरा सीज़न सारे सीजन्स देखे नहीं है. मेरे काफ़ी सारे दोस्त गए उस सीजन्स पे, जैसे पुनीत गया है, धर्मेश गया, राघव गया है, मेरे डांसिंग फ्रेटर्निटी से है वो लोग. लेकिन मैंने सीज़न 9 देखा था और मुझे हर्ष लिम्बाचिया सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि आई थिंक उन्होंने जो बेंचमार्क सेट किया है डर का, मैं उससे वर्स्ट करने वाला हूँ. क्योंकि हर्ष ने तो काफ़ी सारे स्टंट फिर भी किए, मुझे नहीं पता मेरे से होंगे या नहीं, बट ऑफकोर्स मैं शो पे जा रहा हूँ तो अपना 100% दूंगा. I don't have a certain, but I had my friends Ritvik in it and I loved him. Boy, you were good. I think the girls last season were amazing. Anushka, a very dear friend of mine, she was amazing. Shweta did amazing, and Divyanka Di, she was very brave and fearless. So I think Shweta Di, Divyanka Di and Anushka were great last season, and I really hope that girls do well this season too. Obviously, I'm gonna miss my mom and मम्मी को तो बहुत मिस करने वाला. My family, I'm gonna miss them a lot. बाकी my mom gives me a lot of strength. तो अभी भी वो मुझे बोल रहे हैं कि तू कर लेगा, तू जा तू कर लेगा, like that. So I think that is what is keeping me on the go. मैं बहुत strong mindset से जा रहा हूँ and ज़िंदगी में sacrifices करने पड़ते हैं and
आगे बढ़ने के लिए। तो छोटी छोटी चीज़ें सैक्रिफाइस हैं। आज 60 दिन दूर जाऊँगा, लेकिन फिर कल 600 दिन जो साथ में बिताऊँगा वो ऐसे होंगे कि लाइक अ किंग। My plants will miss me a lot. I'm a plant mama. I'm gonna miss my plants. I'm going to miss my dog a lot because she's always been living with me. So उसको मैं बहुत ज़्यादा miss करने वाली हूँ. I'm going to miss my family a lot, my father, because सबसे इतने time के लिए दूर जाने वाली हूँ. So yeah. Guess what? Who? You tell me. Obviously, Ekbir and Aditi and my whole family. But yeah, most सबसे ज़्यादा Ekbir and Aditi. सुन तो नहीं रही हो? I love Singham. I'm a fan of Singham. ये शायद किसी को पता नहीं है. I'm Singham. Yeah. I'm going to be Singham. Yeah. I don't know about Sooryavanshi and Simmba. पता नहीं यार, मैं पहले तो बिल्ली बन के जाना है मुझे, फिर देखते सिम्बा कौन बनता है. I think either one is Tushar, one is me. I think another one is जो मुझे लगता है कि you know that they have that thing, and I think that Pratik is also Pratik. So I think Pratik will be Ajay Devgan, ठीक है. Tushar will be Akshay Kumar, and Ranveer Singh I think will be me. I'll say height, not reptiles for sure. Reptiles. Reptiles. Height. हाय, ऐसे मत बुलवाओ यार. मुनावर. Rajiv, I believe. So I sat near Rajiv when we had a meeting and a briefing. So I didn't get a chance to speak to Munawar all that much. And then I got to know that he's really funny because he cracked one joke. But Rajiv was constantly talking to me. So I think his energy was all on me. Let me get to know Munawar and then we'll see. But I think I'm also damn funny, yeah, guys. Just like, you know. I would say Munawar is funny. He's a comedian and everything. But I think my entertainment is very different to Munawar's. Munawar is a stand-up comedian, which is great. And I love his one-liners. I love his shares. But I think my entertainment is very different. So I think we'll both bring masala to the show in our both different ways. I think Rohit sir is going to be funny. Skydiving. Scuba I've done, so sky. Skydiving. Yes, skydiving. Skydiving. Scuba diving. All of them. Chennai Express, I love Chennai Express, and उसके अलावा भी बाकी जितनी भी movies उनकी, I love all the movies. Golmaal, amazing. Sooryavanshi recently because I just watched that. Singham. Dilwale. Because I was in it. Golmaal. एनी डे बिग बॉस यार. मतलब उधर तुम रहते हो, चिल करते हो, काम करते हो, झगड़ा करते हो, मस्ती करते हो, सब कुछ करते हो. सलमान सर से मिलते हैं. यहाँ पे अच्छा है रोहित सर से हम मिलेंगे, लेकिन रोहित सर के सामने बहुत सारी चीज़ें करनी भी पड़ेंगी. एंड आई डोंट नो कि मैं कितना कर पाऊँगा. मैं सीरियसली बोल रहा हूँ गाइज, आई एम नॉट किडिंग. मेरी एक्चुअली फटी पड़ी है और बहुत ज़्यादा फटी पड़ी है. जब हाँ बोला तब आई वॉज लाइक ओके, बट जैसे जैसे कल प्रोमो शूट हुआ और हम लोग अभी जाने के 2-3 दिन बाद हम निकलेंगे, I'm like, I don't know what I'm going to do. So let's see. भगवान बचा लेना बस. Both are important यार. दोनों experiences हैं. उन्हीं की वजह से मैं आज जो हूँ. And I think दोनों. हर एक experience life का. ये मैं आपको खतरों के खिलाड़ी करने के बाद बता सकती हूँ. ऐसे अभी पहले कैसे बता दूँ? क्या पता मैं वापस आकर बोलूँ ये खतरों के खिलाड़ी, क्या मैं वापस आकर बोलूँ नहीं बिग बॉस ही अच्छा था. So this question I leave it to you for my next interview when I'm back. आप मुझे फंसा रहे हो ये बात करके. पता है ये बहुत गलत क्वेश्चन मुझे पूछते हो. देखो, आई कांट चूज बिकॉज बिग बॉस इज वेरी डिफरेंट. खतरों बिग बॉस इज वेरी स्टार्टेड एंड बिग बॉस आई लव एंड खतरों के खिलाड़ी आई एम गोइंग टू लव. तो दोनों. I'm not choosing. If you like this video, please like, share and subscribe To Pinkvilla.